Hello everyone, welcome back in today's class. Dear students, we have started our exercise 12.2 from Heron's formula and we have discussed two questions of it. Now we have to start with question number 3. This is the figure given in question number 3, that the figure of an aeroplane is given. We have to find the area of complete aeroplane. Okay, the paper used for making this aeroplane, we have to find that area. Okay, so what we will do, we will divide this aeroplane in various parts. Let us take, this is region 1, we will find its area. Then this is region 2, then secondly we will find this area. Then third, I will find area of this trapezium. This is third, and let it be my fourth. This arm will be fourth and this arm will be fifth. So there are four regions, there are four different shapes whose area I will find out, and at last I will add all the areas to find the area of the paper used for making this aeroplane. Fine. Okay, let us start. First I will find the area of the first shape. Area, here I can write area of region 1. You may write region 1 area you are finding. What is that? This is a scalene triangle. This is 5 centimeter. This is also 5 centimeter, and this, it is given here. See, if this is 1 centimeter, what will be the length of this? This also be 1 centimeter. So region area, how can I find? I will use Heron's formula, and before that I will be finding the area. I will be finding the semi-perimeter, that is 5 plus 5 plus 1 divided by 2, that is 5 plus 5 10, 10 plus 1 11 by 2, and you may write it as 5.5. So for finding the area we have to use formula 5.5, that is our S into S minus A, that is 0.5, S minus B, that is again 0.5, S minus C, that is 4.5. Okay, in the next step I will remove the decimal. This is 55, this is 5, this is 5, this is 45, and here 10 will come, here also 10 will come, here also 10 will come, and here also 10 will come. Fine. Now what can we do? Here I will break them down. Sorry, it will be 5.5 minus 1, it will be 4.5. Okay, so students, I will break it down. See, 10 10 10 10, so 10 into 10 will come out of the root. 5 5, the 1 5 will come out of the root, and see, this is 55. If I do it here, 55 can be written as 5 into 11, and 45 can be written as 4 into, or 2 into 2, 2 into 3, 3 multiply by 3, 3 3 is a 9, 9 no, it cannot be written as 55 को लिखेंगे हम 5 into 11, और 45 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 9 5 जा 45. देखो, एक तो 3 बाहर निकल आएगा, एक 5 हमारे पास बाहर निकल आएगा. So 1 3 will come and another 5 will come. Fine. What will remain inside? Inside what? 11 will remain. ठीक है, 5 निकल गया और यहाँ से कौन निकल गया? 5 into 5 into 3. So here it will be 5 by 2, 5 by 2, that means 3 by 4 root of 11. This is what we got. जब आप इसको solve करेंगे, when you will solve it, you will find 2.345 centimeter square. You will find it like this. Okay. The next step will be, we have to find this second portion's area. First here you have to find root of 11, that you have to multiply with 3 by 4, you will get this value. Okay, the next will be, you have to find area of this region, and this region is a rectangle. We should know the length, we should know the breadth. So for finding the area, here we will be writing area of region 2. Second, that means it is a rectangle, so we will be writing area is equal to L into B. Length is my 6.5, my breadth is 1, so it will be 6.5 centimeter square. Okay, area of second I got. Now I have to find out area of region 3. Area of region 3. And what is this? This is a trapezium, and area says 1 by 2 into sum of parallel sides. Sum of parallel sides multiply by its height.
student height is not given to us, so we have to find out height of this figure. So how can we find out? See, I have drawn a perpendicular. See, ये आपका पूरा 2 है स्टूडेंट्स, दिस कंप्लीट इज 2. अगर ये आपका 1 है तो ये बीच वाला पोर्शन भी आपके पास कितना होगा 1, और ये मिला के 1 है तो ये कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर. अगर आप ऐड करेंगे, इफ यू विल ऐड ऑल दीज 3 यू विल गेट 2 ओनली. सो नाउ जस्ट सी इन दिस ट्रायंगल it has become a right angle triangle because we have done a perpendicular. This is a right angle triangle, and in a right angle triangle hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. This perpendicular we have to find out because this perpendicular will become our height here. Okay, what is the value of hypotenuse? That is 1. What is the value of base? That is half. And here perpendicular square, 1 square 1 equals to 1/4 plus perpendicular square. 1/4 will go to that side, 1 minus 1/4. Let me show it properly. 1 upon 1/4 is equal to p square. That means 3/4 equals to p square. P is equal to √3 and root of 4 will be 2. So what is the value of perpendicular I got? Perpendicular here, this perpendicular is the height of trapezium that I can put here. That is 1/2 sum of parallel side. This and this, these two are my parallel sides. एक तो देखो 2 और दूसरी 1, तो दोनों का सम कितना, मैं डायरेक्ट 3 लिख देती हूँ यहाँ पे. और हाइट अभी हमने कितनी निकाली है, √3/2. अगर हम इनको सोल्व करेंगे वी विल गेट 3√3 डिवाइड बाई 4. और फर्दर आप इसको अगर सोल्व करेंगे 3 × 1.732 डिवाइड बाई 4, जब आप मल्टीप्लाई करके करेंगे यू विल गेट 1.3, अप्रोक्स 1.3 यू विल गेट. जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल डिवाइड इट, you will get 1.299, but you can take it as 3. Okay, थर्ड रीजन का भी एरिया हमने निकाल लिया. Now these two regions are left, these arms, and the both arms are equal in area. तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकालेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे दूसरी का एरिया भी उसी के अंदर आ जाएगा. Now just see, this shows that it is a right angle triangle. यहाँ पे पता लग रहा है जो आर्म्स होती है एरोप्लेन की वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसकी बॉडी के साथ. So this is a right angle triangle, and for finding the area of a right angle triangle we can use formula half into base into height. So area of region 4, okay, that is half into base into height. That is half. What is our base? 1.5. What is my height? 6. When you will cut, you will 3 multiply by 1.4, you will get 4.5. And if I have to find out area of region 5, that will be same area of region 5 because both the dimensions are equal. Region 5, that is also 4.5 centimeter square. Now all 5 areas I got, I have to total them for finding the area of paper used. Then area of paper used, I will add all the areas. First area I will get 2.345, then I got 6.5, then I got 1.3, then fourth I got 4.5, then next I got 4.5. So add 2.345 plus 6.5 plus 1.3 plus 4.5 plus 4.5. What will you get at the last? At the last you will get your area equals to, you can add all the areas. What will you get? You can find the sum of these areas. That is 2.345, 6.5, 1.3, 4.5, 4.5. That means 4, 5, 15 and 6, 21. 2 carry. 2 and 4, 4 or 6, 10, 11, 11 and 9, 11 and 8, sorry, 19. So you will get 19.145 centimeter square. Okay, the answer at the back is 19.4, but I just want to convey, find it properly. You will get little variation, you will get it from here only, from this part only you will get little variation because I have done it directly. Please solve it properly, multiply it with 3/4, you will get the proper value. जो हल्का सा यहाँ पे variation आ रहा है आपका 19 point something, you will find the difference here only. Okay, एक बार 11 का रूट आप जब निकालेंगे, क्योंकि I have done it verbally only, so when you will do it you can do it properly. Fine. Okay, let's see question number 4 of the same exercise.
Question number 4 says a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. आपके पास एक parallelogram है और एक आपके पास triangle है. Let us take this is the parallelogram and और इसी बेस पे आपके पास क्या है, एक triangle है. Okay. What information are given are on the same base and the same area. इस triangle का area और इस parallelogram का area same है. Next, if the side of the triangle are 26, 28 and 30, okay, इसकी जो side है 26, 28 and 30 है, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, और parallelogram का जो base है वो 28 है. That means इनमें से कोई हम 26 ले सकते हैं, इनमें से और कोई 30 ले सकते हैं, और parallelogram का और triangle का base हमारे पास 28 रहेगा. नाउ स्टूडेंट वी नो इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन इन द क्वेश्चन कि दोनों का एरिया सेम है. तो देखो हम कैसे शुरुआत करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम. दो पैरेलल लाइन और जीएम लिख देते हैं हम उसके पीछे. और स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखो हमारे पास ट्रायंगल कैसी है, स्केलिन, तो हीरोन्स लगेगा. और पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है हमारे पास, बेस इंटू हाइट, जिसका बेस तो हमें पता है. बेस तो हमें कितना पता है 28, और हाइट हमें निकालनी है क्वेश्चन में. अब एरिया शुरू कर लेते हैं अपना. एरिया पहले तो हमें एस निकालना पड़ेगा. एस सेज 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइड बाई आपके पास कितना आ जाएगा 2. जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, ऐड करने पे आएगा 84 डिवाइड बाई 2. तो एस की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास कितनी आ जाएगी 42. नाउ नेक्स्ट आई हैव टू फाइंड एरिया. ओके, एरिया सेज एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ओके, एस कितना है हमारा 42. 42 में से 26 जाएगा स्टूडेंट आपके पास कितना आ जाएगा 16. 28 अगर इसमें से जाएगा व्हाट विल यू गेट 14. और अगर आप 30 माइनस करेंगे तो व्हाट विल यू गेट 12. करना स्टार्ट करें ब्रेक डाउन. 42 को कैसे कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 6 7 जा 40. ओके, 16 को कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. ओके, 14 को कैसे कर सकते हैं, 2 7 जा, और 12 को कैसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. फाइन. अब देखो 2 कितने हैं हमारे पास, एक आसान सा तरीका कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 2 हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, तो कितने 2 बाहर आ जाएंगे, 4 2 बाहर आ जाएंगे. 2 सारे खत्म कर दिए हमने. 3 3 2 3 थे, 1 3 बाहर आ जाएगा. 7 7 2 7 थे, 1 7 बाहर आ जाएगा. नथिंग इज लेफ्ट इन साइड द रूट. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, एंड 48 7 जा आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट. आप इसको, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या चल रहा था 28 मल्टीप्लाई बाय 7. आप इसको लिख सकते हैं. व्हाट डिड यू गेट, यू गेट 48 मल्टीप्लाई बाय 7. मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है. इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय एच. आप 28 को इधर ले आए. 48 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 28 इक्वल्स टू एच. 7 से इसको कट करेंगे 4 जा से, 4 से इसको कट करेंगे 12 से. तो आपके पास स्टूडेंट हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 12 सेंटीमीटर. This is what is being asked in the question. Student, I hope all these two questions of this exercise are clear for everyone. Okay, if not, please let me know in the comment section. If you really find it useful for you, important for you, please do not forget to like, share and subscribe the channel. And we will meet in our next video. Till then, goodbye and take care of yourself.